So, good morning, everyone. Today we shall be starting with the second chapter, the thermodynamics chapter. So, let's get started. Right. So, let's start. What what is a thermodynamic system? So, there are basically three systems. One is the open system, another one is closed system, and third one is the isolated system. So the first system means open system means that energy and matter exchange is possible. That is, you can the exchange of energy and matter is possible in open system, right? After that comes the closed system. In this system, energy can be exchanged, but the matter cannot be exchanged. System is isolated system. In this, both the system is thermally as well as mechanically isolated. That is, the system is both thermally and mechanically it is isolated, right? Now we shall be discussing about thermodynamic variables. So the first question that you would ask me is, what is a thermodynamic system? A system basically means that a system which can be expressed in terms of experimental measurable quantities. These measurable quantities could be mass, volume, temperature, or pressure. It means that थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज कि जिसे हम मास वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. ठीक है. And there is one thing that need to note down, that is thermodynamic deals with either a closed system or an isolated system. Why? Because in both these systems, the exchange of matter with surrounding is not there, right? Just like I just told you that in closed system, matter cannot be exchanged. Similarly, in isolated system also, as it is thermally and mechanically isolated, hence in that case too, the matter cannot be exchanged. So that is written over here that the thermodynamic deals with a closed system or an isolated system. Like whenever we would be talking about thermodynamics in this chapter, we would be considering a closed system or an isolated system, right? Hence, three variables like pressure, volume, temperature describes the behavior of a system completely. The pressure, volume, or temperature. These are the three variables which describes the behavior of a system, whether it is a thermodynamic system or not, right? Now we shall be dealing with what is an extensive and intensive variable. Though we know that what are the thermodynamic variables. Now in thermodynamic variables there are two categories. One is the extensive variables and another one is intensive variables. So let's go with what is extensive variable. The variables that are proportional to mass. For example, volume, internal energy, enthalpy, entropy. Okay. So, and extensive variables are those which are proportional to mass. Say volume. When we increase the volume, the mass increases, right? When internal energy increases, the mass also increases. So we can say that extensive variables are those which changes mass. Say whether a mass could be inversely proportional or directly proportional, but it has to be proportional to mass. If any variable is proportional to mass, then it's an extensive variable, right? And the examples are volume, internal energy, enthalpy, like I just told you. After that comes the intensive variables. These intensive variables are those which are independent of mass. Okay. For example, temperature, pressure. Say, if you increase the mass, does the temperature changes? No, right? If you increase the mass, does the pressure changes? No. So these are intensive variables. Temperature and pressure are intensive variables because they do not depend on mass. Whether you increase the mass or decrease the mass, the temperature doesn't change. Okay. So this is a brief intro about what is an intensive and an extensive variables. Now we will discuss what are the differences in extensive and intensive variable. See, in intensive variable,
It does not change with amount. Example, temperature, pressure, density, right? Changes with amount, right? What's written, we are talking about mass, right? Mass does not change with amount. Whether you increase the temperature, pressure, or density, it doesn't change. The mass remains same. But in extensive variable, the mass changes with amount. It changes with amount, right? Characterizes the matter. It is a local physical quantity, for example, density, refractive index, elasticity, boiling point. There are no information about the system. If f and g are intensive variable, then fg, f by g, df by dg, and f plus g are also intensive, right? Okay, whether you add, multiply, divide, or you differentiate, all those variables would that you will receive, they would also be an intensive variable. But if f and g are extensive variable, in that case f plus g would be extensive, but f divided by g or df by dg is would be an intensive variable, right? So this is a thing that you need to note down. This is really an important thing. Now let's look let's note some let's look at some important notes that you need to keep in mind. So it is written that sometimes extensive variables are referred by their specific values. That is value per unit mass. Special values are SP values are in intensive variable. Say SP volume is equal to V by M. Some properties are neither intensive nor extensive, right? For example, electrical impedance are additive when two subsystems are attached in series. While if attached in parallel, the resultant impedance is less than that of the system. Generally, thermodynamics deal with qualities that are not properties of the. Some examples of intensive variables are surface tension, thermal conductivity, viscosity, rotation. While example of extensive are energy, enthalpy, entropy gives free energy, mass, volume. Now let's discuss about thermal equilibrium. Thermal equilibrium is a condition where when two substances are in physical contact with each other, there is no energy transfer, right? Then in that case, we call it a it to be in a thermal equilibrium. So if you need to understand it in a lame language, then you can say that when both the substances are at same temperature, then we call it a thermal equilibrium, right? Concentration gradient diffusion. When no further concentration gradient is there, then system reaches dynamic equilibrium. During mixing of gases, temperature changes till Ta1 which is equal to Tb1, which is equal to T mixture. If chemical reaction is taking place, then chemical equilibrium attained when the chemical composition is same throughout the system. See, when we talk about thermodynamic equilibrium, we have other equilibriums too, like one is dynamic equilibrium. In this concentration gradient, diffusion, or concentration gradient, which means diffusion. When no further concentration gradient change is there,
then we called it a dynamic. Then we call the system to be in a dynamic equilibrium. During mixing of gases, temperature changes till TAB equals to TB1 equals to T of mixture. Then it is called thermal. If the pressure gradient is there, then pressure changes till PA is not equal to PB to achieve mechanical equilibrium. Hence, at equilibrium, the state of system is same at all the points of the system. Does not change with time. Hence, thermodynamic equilibrium is the state when system is in mechanical thermal. When is in mechanical thermal or chemical equilibrium. Okay, hence okay. So it is really an important thing that we need to understand, right? We call a system to be in thermodynamic equilibrium when the system is mechanically, thermally, and chemically in equilibrium state with its surrounding, and there is no change in properties with with the change in time, right? Okay, that's a very important point. Thermodynamic equilibrium is when mechanical, thermal, and chemical equilibrium is attained, right? This is okay. So we can say that thermodynamic equilibrium is equal to mechanical equilibrium, thermal equilibrium, and chemical equilibrium, right? Yeah. So let's discuss about macroscopic properties are measurable properties like P, V, and T processes. When the value of thermodynamic variables associated with the system changes from one equilibrium state to another, the system is said to when the value of the thermodynamic variable associated with the system changes from one equilibrium state to another, the system is said to undergo a thermodynamic process. In order to analyze a process, it is necessary to plot variations of one thermodynamic variable with respect to another. Such a plot is called indicator diagram. The state of the system is uniquely defined by a point on the indicator diagram, and the process is just a line joining series of such points. The state of the system is uniquely defined by a point on the indicator diagram. Consider an expansion. For example, in the above diagram, the initial and the final state are given uh, by points A and B. In the process, if the process is executed very slowly, now we shall be discussing about reversible and irreversible processes. A reversible process is when we retrace in opposite direction by changing the external conditions according to our wish. For example, if a heat is absorbed in a direct process, then the same amount of heat will be given out if we reverse that particular process. Say if we have a ice cube, right? And if we give 10 joule of energy and it converts into water, say 10 gram water. Now if we take that 10-gram water and extract the heat out of it, it should convert into ice. And if it is possible, if these two things are possible, then we could say that the system is a then we can say that the process is reversible process, right? Hence, there is no wastage or loss of heat at all in reversible process, right?
The working part of it must be free from friction. Let's talk about an irreversible process is one which cannot be retraced in opposite direction. And I would like to. And what is an irreversible process? Is one which cannot be retraced in opposite time by changing the external condition. So can you please explain? तो भयंकर एक ही बता. हाँ. हाँ. Let's talk about what is a quasi-static process. A quasi-static process is a process which is carried out extremely slow so that every stage through which the system passes departs only infinitely from the equilibrium. क्या हो रहा है? Through which the system passes and departs only infinite from the. Let's check what's a quasi-static process. A quasi-static process is a system of physical process that occurs very slowly and can be described as an almost static state. In other words, it involves small changes over a long period of time. This can be contrasted with dynamic process, which occurs quickly and involves rapid changes. Quasi are commonly found in fields such as material science, where the behavior of the material is studied under controlled conditions. It is important to note that the concept of quasi staticity is often approximated as it is difficult to achieve a process that truly lasts an infinite amount of time. Right?
So we can say that a quasi-static process is one which is carried out at an extremely slow, which is carried out extremely slow, so that every state can be gone through which the state passes, right? We can monitor every stage from which the system had passed. Departs only infinitely long from the equilibrium, and it departs. इसका मतलब- What does it mean? Value or proposition from an equilibrium point. The system does not undergo any change in response to extreme external pressure or stimuli. Okay, ask a follow. Short. I think an infinitesimally departure refers to an extremely small difference in value or position from an equilibrium point, right? The departure from this point can be infinitesimally small. मतलब बहुत छोटा, meaning it is so small as to be virtually negligible or okay, okay, इसका मतलब ये होता है. ओके, देखो क्या होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है. वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत स्लोली होता है, बहुत ही ज्यादा. इतना स्लोली करते हैं सारे प्रोसेस जिससे क्या हो कि वी कैन मॉनिटर द स्टेजेस. हम जिससे देख सकें और मॉनिटर कर सकें वो सारी स्टेजेस जहां से एक सिस्टम पास हुआ था उस प्रोसेस के दौरान. ठीक है. और जो ये प्रोसेस होता है वो इतना इतना मतलब डिपार्ट्स, मतलब इसमें जो ये प्रोसेस होता है ना, ये इतना इसमें इतना छोटा डिफरेंस होता है ना इन वैल्यूज और पोजीशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट. बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम ये इक्विलिब्रियम से ही पास हुआ था. ठीक है. तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. दिस मीन्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस corresponds टू अ सक्सेशन. ओके, लेट इसको भी सर्च मार लेते हैं एक बार. हाँ हाँ, let's see what comes. Is a process that occurs at a very slow rate, allowing the system to reach a state of thermodynamic each between each process of the hormone. In other words, causing is a process that occurs gradually over a long period, allowing the system to adjust to each step. Now, moving on to that, this type of process is often used in engineering and physics to model that changes slowly over time. ठीक है. ओके, समझ ही हो गया आप वैसे ना कि क्या होता है. हम लोग मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक सक्सेशन है, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक एक जैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ना, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहुंच गए. ठीक है. मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, थर्मली, केमिकली और डायनेमिकली जो ये सब जब एक इक्विलिब्रियम तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिकल वो कहते हैं ना. तो क्वासी स्टैटिक क्या होता है कि जैसे थर्मोडायनेमिक एक इक्विलिब्रियम में पहुंचा है, तो क्वासी स्टैटिक भी मान लो कि एकदम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के एकदम पास ही होता है ये वाला प्रोसेस. ठीक है. If a system undergoes infinite departure from equilibrium, the process is said to be a non-quasi-static. If a system undergoes finite departure, so it undergoes finite departure from equilibrium, the process is said to be non-quasi. ओके. अब देखो क्या होता है, एक तो क्वासी स्टैटिक बता दिया मैंने. अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बहुत, देखो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है ना, तो हम लोग कह देते हैं कि वो भी एक तरह से सक्सेशन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का. बट अगर ऐसा होता है कि जो सिस्टम है वो अंडरगो कर रहा है जब डिपार्चर और उसमें बहुत ज्यादा गैप है, मान लो कि इक्विलिब्रियम मान लो कि 50 पे आ रहा है, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, 50 कुछ है नहीं, मतलब मान लो 50 पे, और
जो हमारा क्वासी जो ये प्रोसेस हो रहा है वो हमारा 20 पे हो रहा है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। ये क्वासी स्टैटिक के लिए 50 से मान लो कि 45 पे होता तो हम उसे क्वासी स्टैटिक बोल सकते थे। बट इस वाले केस में हमारा क्या है, 50 पे था और अभी 20 पे है। तो 30 का डिफरेंस जो आ रहा है ना, हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्वासी स्टैटिक है, हम इसे बोलेंगे नॉन क्वासी स्टैटिक। बिकॉज जो सिस्टम है वो अंडरगो करा उसने फाइनाइट डिपार्चर हुआ इक्विलिब्रियम से, ठीक है। अब चलो, अब दूसरी, फॉर अ नॉन क्वासी स्टैटिक सिस्टम द सिस्टम वेरिएबल डू नॉट डिफाइन द स्टेट थ्रू विच द सिस्टम passes, nor they can describe the process it undergoes. देखो, अब इसने एक और बढ़िया बात बोली कि अ कॉसी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी अ कॉसी स्टैटिक प्रोसेस, बट अ कॉसी स्टैटिक प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल। देखा, इसको समझना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है कॉसी स्टैटिक है, ये वो ठीक है। क्यों भाई? अब आता है साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्लोज पाथ ऑफ अ इंडिकेटर डायग्राम। देखो, इंडिकेटर डायग्राम आया था ना ऊपर ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम। जो ये बन रखा है ना प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बन रखा है, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। अब लेट्स कम टू दिस। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, क्लोज पार्ट ऑफ अ, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है पता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ये लाइन बन रखी है ना, साइक्लिक में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा क्लोज होगा, या तो ट्रायंगल बन जाए या ऐसे बन जाए, पर ये एक शेप होगी, ठीक है। मतलब ये पूरे, ये अच्छे से ज्वाइन हो रखा होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस, इट इज क्लोज पार्ट ऑफ एन इंडिकेटर डायग्राम। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक होता है जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और थर्मल होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, नो थर्मल इंटरैक्शन। एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट का चेंज नहीं होता, हीट चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। अब पहले पढ़ लेते हैं हम क्या होता है जीरोथ लॉ, ठीक है। जीरोथ लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक का? A zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium with each other. ओहो, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला इसने, अगर मान लो कि दो सिस्टम है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब जब दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ थर्ड वन, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में बी, और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी में। मान लो ए इक्वल्स टू बी है, और फिर हम बोल रहे हैं कि बी इक्वल्स टू सी बी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल टू सी, यही हुआ ना। तो बस यही है जीरोथ लॉ। अगर दो सिस्टम, दो थर्मल इक्विलिब्रियम में विद थर्ड वन, देन वी कैन से दैट ऑल द सिस्टम्स, all three systems are in equilibrium, thermal equilibrium with each other. Consider three isolated. Let pressure and volume be independent to describe these. P1, देखो एक सिस्टम की P1 V1 है, एक सिस्टम P2 V2 है, और एक सिस्टम P3 V3 है। अब हम कह रहे हैं कि सपोज करते हैं हम कि सिस्टम वन और सिस्टम थ्री इक्विलिब्रियम में, वी कैन एक्सप्रेस इट एज द फंक्शन, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, ओके, फंक्शनल ओके, ये कर दिया हमने।
and V3 P3 will be uniquely defined. When two or more systems are in thermal equilibrium with each other, there exists a single valued function of a state variable P and V which has a common value for all of them. ओके, इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. Zero is given gives the precise meaning of the temperature. Equation of state is a thermodynamic equation. देखो अब क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट एक thermodynamic equation relating the state variables which describes the state of the matter under a given set of physical condition. इक्वेशन ऑफ स्टेट एक ऐसी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है रिलेटिंग दी स्टेट वेरिएबल मतलब स्टेट वेरिएबल जो होते हैं उनको रिलेट करती है विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर अंडर अ गिवन सेटअप मतलब वो बताती है कि क्या हो रहा है. ठीक है जनरल फॉर्म. मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होती है कि उसमें मतलब जो हमारे जो स्टेट वेरिएबल्स हो वो उसमें रिलेट कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है. स्टेट वेरिएबल्स का यूज करते हैं और पता चलता है कि जैसे जो हम स्टेट वेरिएबल किस कैसे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है यही होता है सिस्टम वो होता है. ठीक है अब नाउ वी शुड बी few important terms like coefficient of volume expansion, coefficient of isothermal elasticity. Thermal expansion is a tendency of a matter to change its shape, area, volume in response to temperature. Thermal expansion क्या होता है कि जब एक टेंडेंसी होती है मैटर की चेंज शेप एरिया वॉल्यूम डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. If an equation of the state is available, it can be used to predict the value of thermal expansion at all the required temperature. Coefficient of thermal expansion describes how the size of an object changes with specifically it measures the fractional change in size. Several types of coefficients are there. Volumetric, area, linear. The choice of coefficient depends on the application and what is the coefficient of isothermal and adiabatic elasticity? Elasticity is a tendency of to change back to its original state when external force is removed. Okay. Elasticity क्या होता है? Like आपने रबड़ देखा है? Like हेयर बैंड वाला रबड़. जब आप उसको खींचते हो और जैसे आप खींचते हो तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो. ठीक है खींचने पे. और जैसे ही आपने उसको छोड़ा मतलब जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी अब जैसे ही आपने उसे रिलीज करा तो क्या होता है कि वो बैक आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना. तो इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि एक टेंडेंसी एक प्रॉपर्टी एक मटेरियल की कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सके जब हम उसमें से एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. ठीक है. Due to high compressibility, the gases possesses volume elasticity. Due to high compressibility, the gases possesses volume elasticity. However, the magnitude of the volume elasticity depends on the condition under which it is compressed. Coefficient of isothermal and adiabatic elasticity. If a gas is compressed such that its temperature does not change, that is under isothermal condition,
Then the corresponding volume elasticity is called isothermal elasticity. If a gas is compressed such that the temperature does not change, that is undergo isothermal condition, then the corresponding volume elasticity. Okay. Compressibility is inverse of elasticity. Since the volume decreases as pressure increases at a सो गाइस थोड़ा रुकते हैं. ठीक है. पॉज करने का ऑप्शन किधर है? थोड़ा वेट करते हैं. पॉज. स्क्रीन को पॉज कैसे होगा? एक बार खत्म ही कर देते हैं इसको भी एकदम. ठीक है. Consider equation of a state f p v t equal to 0. It can be resolved as p equals to f. dp by dt हो गया. ये आ गया. यहाँ क्या क्या dp by dv. dp by जो हम लोग dp by dv लिख रहे हैं उसका मतलब ये होता है एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है. अब देखो इसको कैसे नोटेशन जो लिख रखा है ना ये इसको समझते हैं थोड़ा. ठीक है. ये जो आपने लिख रखा है ना डीपी बाई डीवी. डीपी बाई डीवी का मतलब क्या होगा? चेंज चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. चेंज इन प्रेशर. जो ऊपर लिखा है चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा होता है वी व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है. जो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये कंडीशन है जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है वही लिख रखा है यहाँ पे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर with volume when the temperature is kept constant is called isothermal process. ठीक है. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द वॉल्यूम इज kept constant इट्स कॉल्ड आइसोकोरिक. फॉर एन isobaric process dp equals to zero. Hence the equation takes the form this. Right. अब जो ये फाइनल इक्वेशन आई है implies that for a given change of temperature the increase in pressure will be more than expansivity as well as elasticity are large. For an isochoric process one can calculate the final pressure for a given
In above analysis, we calculate the change in pressure. We consider volume and temperature as independent variables, and pressures are uniquely defined. When we take pressure and temperature as independent variables and solve for V, if consider pressure. हाँ, इसको मैं आपको हाँ ठीक है करवाते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हैं। सो क्वेश्चंस करने के लिए तो हमें खुद आना चाहिए पहले तो। ठीक है, द आइसोथर्मल compressivity and expansivity of a hypothetical substance are respectively Pt is A by V and alpha equals to 2B by TVL. Derive a equation for under chain. We already have dV by V, right? Yes. Okay, okay, this is the call. ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।